Brilliant scientist though he was, Griffin was rather a lawless person. So, though Griffin as a scientist, he was a genius. He was outstanding. But he was a lawless person. But Griffin was not a good person. He didn't believe in rules and regulations. He didn't believe in morality. He was a lawless person, scoundrel. His landlord disliked him and tried to eject him. And his landlord, means the place where he used to live, his landlords didn't like him and they tried to eject him. Eject him means drive out, and they had him driven him out of the house. In revenge, Griffin set fire to the house, and because Griffin was not at all a thankful person, that's why he wanted to take revenge, and in that revenge he set fire to the house. To get away without being seen, he had to remove his clothes, and because he didn't want to get blamed, that's why he had to remove his clothes to become invisible. And he didn't want to take the responsibility of his misdeed that he had done, that was setting fire to the house. Thus it was that he became a homeless wanderer, and now he was without a house. He had become a homeless wanderer. Wanderer means tramp, आवारा. अब ग्रिफिन, जबकि वो एक बहुत ही अच्छा साइंटिस्ट था, लेकिन एक लॉलेस पर्सन था. लॉलेस यानी कि होता है कि जो कानून में, अच्छाइयों में विश्वास नहीं करता. एक अच्छा इंसान नहीं था ग्रिफिन. उसने क्या किया, उसके लैंडलॉर्ड उसकी इस हरकतों से वाकिफ़ थे और उन्हें वो पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने उसको घर से निकाल दिया. और बदला लेने के चक्कर में ग्रिफिन ने उनके घर में आग लगा दी, और वो चाहता था कि इसका इल्ज़ाम भी उसके ऊपर नहीं आए, इसलिए वो अपने कपड़े उतार के वहाँ से इनविजिबल होके भाग गया, और इस तरीके से वो बिना घर के हो गया और इधर उधर आवारा की तरह घूमने लगा. एंड ही वॉज विदाउट क्लोथ्स, विदाउट मनी एंड क्वाइट इनविजिबल. एंड बिकॉज ही हैड नो हाउस, दैट्स वाई ही वॉज हैविंग नो क्लोथ्स, no money, nothing, and invisible he was, until he happened to step in some mud and left footprints as he walked, and he was his presence was felt by two people who were standing in the street when the footprints were made by Griffin, and the footprints were left as he walked on and on and on. So जब वो तब तक किसी को उसकी प्रेजेंस के बारे में नहीं पता था चला, जब तक कि वो कीचड़ में उसके पैर नहीं चले गए और फुटप्रिंट्स नहीं बन गए. जैसा मैंने आपको फर्स्ट पैराग्राफ में बताया कि दो लड़के खड़े हुए थे, उन्होंने देखा कि ताज़ा ही कीचड़ के निशान बने हुए हैं. वो एक्चुअली ग्रिफिन कीचड़ में से होके आया था, तो उसके कीचड़ से पैरों से उसके निशान बन गए थे. तब किसी को उसकी प्रेजेंस के बारे में पता चला. He escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London, and now Griffin was able to escape himself from the boys who had been chasing his footprints in London. ग्रिफिन क्योंकि वो इनविजिबल था, इसलिए इसके लिए ये बहुत आसान था कि वो बच्चों की नज़रों से ओझल हो सके उन दो बॉयज़ की जो उसके फुटप्रिंट्स का पीछा कर रहे थे लंदन में. बट हिज एडवेंचर्स वर बाय नो मीन्स ओवर, बट ही डिडंट स्टॉप हिमसेल्फ फ्रॉम डूइंग द एडवेंचर्स. लेकिन उसके एडवेंचर्स जो वो करने वाला था वो किसी भी तरीके से ख़त्म नहीं हुए थे. आप सभी जानते हैं, कोई भी अगर बुरा इंसान है तो बुराइयों, कोई भी गलत काम करने से नहीं चूकता, जिसके अंदर भी बुराइयाँ भरी हुई हैं. सेम वॉज द केस विद ग्रिफिन. He had a bad time. He had chosen a bad time of the year to wander about London without clothes, and he had by his choice he had taken a bad time of the year to roam about into the streets of London without clothes. Do you know why? Because it was winter. It was winter season. That's why it was a bad time for him to roam here and there in the streets of London without clothes. ग्रिफिन ने एक गलत टाइम चुना था बिना कपड़ों के लंदन की गलियों में घूमने का. क्यों? क्योंकि ये कौन सा मौसम था? सर्दियों का. सर्दियों में हम क्या बिना कपड़ों के रह सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं. इसलिए ग्रिफिन के लिए बहुत ही बुरा टाइम था. इट वॉज मिड विंटर
Thus, it was midwinter, the air was bitterly cold, there was biting cold, and he could not do without clothes, and he could not live without clothes. He had to arrange clothes for himself. Instead of walking about the streets, he decided to slip into a big London store for warmth. And now Griffin, because he was feeling very cold, that's why at last he decided that instead of walking into the streets of London, he would go to a store of London and will give some warmth to his body. अब क्योंकि ये सर्दियों का सीज़न था और ठंडी हवा चल रही थी, इसलिए ग्रिफिन ने डिसाइड किया कि वो बिना कपड़ों के इधर उधर घूमने से और बीमार होने से अच्छा है कि वो अब गलियों में घूमने के बजाय किसी स्टोर में जाएगा लंदन में, और वहाँ पे जो लंदन में स्टोर होंगे वो तो गर्म होंगे, बिल्कुल जाहिर सी बात है, तो वहाँ जाके कुछ गर्मी लेगा और हो सकता है वहाँ से कपड़े भी ले. क्लोजिंग टाइम अराइव्ड and as soon as the doors were shut, Griffin was able to give himself the pleasure of clothing and feeding himself without regard to expense. And now because he had become invisible, that's why he tried to take some advantage of it. And as soon as the closing time of the store arrived, and the doors were shut, Griffin decided that he will take the pleasure of clothing, means he is going to steal some clothes from the store and feed himself without paying anything for them. और जैसे ही दुकान स्टोर बंद होने का समय आया और दरवाजे बंद हुए, ग्रिफिन ने तुरंत सोचा वाह अब तो मज़े आ गए, अब ना ही मुझे पैसे देने पड़ेंगे कपड़ों के लिए, ना ही खाने पीने का जो भी सामान था स्टोर में. तो उसने सोचा अब मैं कुछ कपड़े लूँगा और जो भी मुझे खाना है बिना कोई पैसे खर्च किए मैं आराम से खा सकता हूँ. He broke open boxes and wrappers and fitted himself out with warm clothes. He just he opened the boxes, opened the seal of the boxes and wrappers, and took some clothes that were fitting to him, that were suitable for him, fitting to his body, that gave him some warmth. And soon, with shoes, an overcoat and a wide brimmed hat, he became a fully dressed and visible person. And soon after some time, wide brimmed means having wide boundary, and wrappers here means covers. So now after some time he had taken a wide brimmed hat and a fully covered fully dressed, he was fully dressed and he became visible now. Can you tell why? Because now he had clothes on his body, and as soon as he used to wear the clothes he became visible, he used to become visible. So अब उसने क्या किया, उसने बॉक्सेस खोले, रैपर्स खोले और शॉप्स में जो भी कार्टन्स के थे और जो भी क्लोथ्स उसको फिट हो रहे थे वो क्लोथ्स निकाले, गर्म कपड़े निकाले, उसने उनको पहना, शूज़ पहने, ओवरकोट पहना, एक हैट पहना बड़ा सा जो उसको कवर करे अच्छे से सिर को, और वो पूरे अच्छे से ऊपर से नीचे तक जो भी कपड़े पहन सकता था वो सब पहन लिए एंड वो विजिबल हो गया. इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट he found cold meat, and in the kitchen of the restaurant he found some meat and coffee that was cold, and he followed up the meal with sweets and wine taken from the grocery store. And grocery means provisional store, and he had taken some cold meat, coffee, some sweets and wine from the grocery store, and finally he settled down to sleep on a pile of quilts. Quilts means rajai. And finally he decided that he will sleep on the warm covers. Quilts means warm covers. He had decided that he will take some sound sleep on warm covers. उसने सोचा कि अब मैं रज़ाई के जो ढेर लगे हुए हैं उनके ऊपर जाकर के थोड़ा आराम करूँगा. If only Griffin had managed to wake up in good time, all might have been well. Now the writer says that if Griffin had been able to wake up in good time, in correct time, then all might have been well with him. अगर ग्रिफिन सही समय पे उठ जाता, क्योंकि सर्दी थी और अच्छे से उसको रज़ाई भी मिल गई थी तो उसको बढ़िया नींद आ गई और वो ठीक टाइम पे उसको स्ट्राइक नहीं हुआ कि उसको वो कहीं और है, अपने घर में नहीं है, तो उसको करेक्ट टाइम पे उठना होगा और वो सोता रह गया. अगर वो सही समय पे उठ जाता तो ये सब जो आगे हुआ है उसके साथ वो नहीं होता. क्या हुआ? As it was
he did not wake up until the assistants were already arriving next morning, and he was sleeping on the pile of the quilts, and he didn't wake up in time, and the assistants found him lying on the pile of quilts next morning. और वो सोता रह गया, और जब असिस्टेंट्स आए जो स्टोर में काम करने वाले थे वो आए तो उन्होंने देखा कि रजाई के ढेर के ऊपर कोई अजनबी सोया हुआ है. When he saw a couple of them approaching, he panicked and began to run. And as soon as he found that the assistants had been standing around his body, he just panicked, means he became very worried and got frightened. Panicked means got frightened and he began to run. और जैसे ही उसने देखा कि अरे ये तो असिस्टेंट आ गए, अब मुझे पकड़ेंगे मारेंगे, तो वो तुरंत बहुत परेशान हो गया और उसने क्या किया, वहाँ से भागना, वो डर गया और वहाँ से भागने के लिए रेडी हो गया, भागने लगा. They naturally gave chase, and it was natural because they had found a stranger in the store. That's why they naturally started chasing him. और उन्होंने देखा कि अरे ये तो अजनबी है, चोर है, स्टोर में इस तरीके से घुसा है, तो इसलिए उन्होंने उसका पीछा करना शुरू कर दिया. In the end, he was able to escape only by quickly taking off his newly found clothes. And at the end, he was able to save himself, to escape from the place only when he took out all his clothes that he had taken from the store. और वो तब उसके पास सिर्फ बचने का एक ही चारा रह गया. उसने क्या किया लास्ट में, जो उसने न्यू क्लोथ्स लिए थे स्टोर से, जो उसने पहने थे नए नए कपड़े, वो सारे उतार दिए और इनविजिबल हो गया. So once more he found himself invisible but naked in the chill January air, and again he had become naked without clothes. He had become invisible, but he was naked in the chill, in the biting cold atmosphere of January. जो चुभन वाली ठंडी होती है, उस ठंड में वो वापस बिना कपड़ों के हो गया. This time he decided to try the stock of a theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulders. And this time now he had decided that to try the stock of a theatrical company. Now he had decided that he should take some clothings from the theater. The people who work in theater, he is going to steal the clothes of those people. So what did he do? He went there, and but what happened? Now we are going to find it out. Shivering with cold, he hurried to Drury Lane, the center of the theatre ward. And because he was without clothes, that's why he was shivering with cold. He hurried to the one of the lane of London that was in the center of theatre ward. He soon found a suitable shop, and very soon he found a shop that was suitable for him. और जल्दी ही उसको एक शॉप मिल गई, थिएट्रिकल शॉप मिल गई, जहाँ पे उसको क्लोथ्स चाहिए थे और कुछ और भी चाहिए था जो उसके शोल्डर्स को कवर कर सके. ही मेड हिज वे इनविजिबल अपस्टेयर्स. Because he was invisible, so it was very easy for him to make his way and go upstairs, and came out a little later wearing bandages around his forehead. And then after some time, when he came down, he was wearing bandages around his forehead, dark glasses, false nose, big bushy wide side whiskers and a large hat. और ये सब उसने पहना हुआ था. bandages यानी वो रैपर्स पहने हुए थे, अपने फॉरहेड की चारों तरफ पट्टियाँ बांधी हुई थी. डार्क ग्लासेस पहने थे, काले रंग के चश्मा पहना था उसने. फॉल्स नोज़ यानी जैसे नकली नाक आती है ना, वो लगा ली थी उसने. बिग बुशी साइड विस्कर्स, और उसने जो बुशी विस्कर्स थे वो भी अपने उसने लगा लिए थे, मतलब मूछें वो जो नकली थी उस तरीके का कुछ उसने लगा लिया था. यानी कि हेयर ऑन हिज चीक्स, विस्कर्स मीन्स हेयर ऑन हिज चीक्स, वो उस तरीके का नकली उसने सब लगा लिया था. देन व्हाट हैपेंड? He to escape without being seen, he callously attacked the shopkeeper, and this time he didn't want to take any risk. That's why he himself first of all attacked the shopkeeper from behind, after which he robbed him of all the money he could find. And this is the second incident, class, when you will be asked the character sketch
of Griffin in the examination, you can mention this thing while citing the example, that this is the first time when he was in the London store, what the things that he had stolen from the grocery and from the store, the clothings. So now this is the second example, that from the theater he had stolen these things, and he attacked the shopkeeper also and robbed him all of all his money. यानी उसने जो थिएट्रिकल शॉप का जो ओनर था उसके ऊपर अटैक किया और उसके पास से भी सारा उसने पैसा उसका चुरा लिया. Eager to get away from crowded London, he took a train to the village of Epping. Now Griffin decided that he will leave the crowded city London, and he was curious for that, and for that reason he took a train to the village of Epping, where he booked 2 rooms at the local inn. Epping was the place where he had already booked 2 rooms at the local inn. सो ग्रिफिन ये जगह छोड़ करके जाने के लिए बहुत उत्सुक था, क्योंकि उसको जितनी मनी चाहिए थी उसको मिल गई थी, इसलिए वो जगह छोड़कर लंदन छोड़कर जाना चाहता था इपिंग, जहाँ उसने ऑलरेडी 2 रूम्स 2 कमरे जो थे एक सराय में, इन माने सराय जहाँ लोग जाकर ठहरते हैं एक लॉज की तरह, वहाँ उसने 2 रूम्स बुक कर लिए थे. द अराइवल ऑफ अ स्ट्रेंजर एट इन विंटर वॉज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट, and arrival of a stranger at that inn in the season of winter was in any case a very strange event. And because it was winter season, so it was not expected, means the inn owner was not expecting any guest to arrive. ये एक सर्दियों के सीज़न में इपिंग में कोई भी जा कर के रहना नहीं चाहता था, और सर्दियों के सीज़न में उनको एक व्यक्ति मिल गया जो कि आया था वहाँ लॉज इन में रहने के लिए, तो वो बहुत सरप्राइज हो गए जो ओनर थे इनके. अ स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस सेट ऑल द टंग्स वेगिंग. एंड नाउ बिकॉज दिस man Griffin was looking very strange, because his so many parts of his body were covered with the bandages. That's why he was looking very strange. So a stranger of such common appearance set all tongues wagging. Now everybody was stunned, everybody was bewildered, surprised when they looked Griffin in a very strange अपीयरेंस. हर कोई सरप्राइज हो गया उस स्ट्रेंजर यानी कि ग्रिफिन को देख करके, क्योंकि उन्होंने ऐसा व्यक्ति कोई देखा ही नहीं था जो शरीर के काफ़ी भागों पे पट्टियां बांध के रहता था. सबकी जीभ जैसे जम गई थी. मिसेस हॉल, द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली, एंड द वाइफ ऑफ द ओनर ऑफ दैट इन, मिसेस हॉल, pretended to be very friendly to Griffin. Means she made every effort to be friendly with Griffin, but Griffin had no desire to talk and told her that his reason for coming to Epping is a desire for solitude. Means he wanted complete privacy. He told this thing on the very first day to the owner of that lodge, that inn that was in Epping. सीधे फर्स्ट डे ही उसने ग्रिफिन ने बता दिया मिसेस हॉल को कि वो एकदम अकेला रहना चाहता है, कोई भी उसको वहाँ डिस्टर्ब ना करे, इसलिए वो ऐसी जगह पे एकदम सुनसान जगह पे आके ठहरा हुआ था. आई डोंट विश टू बी डिस्टर्ब्ड इन माई वर्क, एंड ही फ्लैटली टोल्ड मिसेस हॉल दैट ही डिडंट वांट टू बी डिस्टर्ब्ड बाय एनीवन during his work. Besides, an accident has affected my face. And he at once came to know that everybody was very, very eager, very curious to know about his appearance. That's why he told her that he had met with an accident, and due to that accident his face was injured. That's why he had covered his face with so many bandages. जब ग्रिफिन वहाँ आया, वो सबके जेस्चर्स को देखकर, सबके भावों के मुख को, चेहरे को देखकर समझ गया कि सब लोग क्यूरियस थे उसका चेहरा देखने के लिए कि क्यों, और ये रीज़न भी जानने के लिए कि क्यों उसने पट्टियों से चेहरा ढका हुआ था. तो ग्रिफिन ने सबको बताया है कि वो उसको एक एक्सीडेंट उसका हो गया था, जिसके कारण उसका चेहरा बैडली अफेक्ट हो गया है, इसलिए उसने अपने चेहरे को पट्टियों से ढका हुआ है.